Our top lead this evening. Ladies and gentlemen, sometimes seeing our MPs and MLAs at work, you often wonder why you elect them. We take a leap of faith and elect our representatives. We as citizens expect them to do what? We expect them to look out for us, address our issues, raise our concerns in Parliament and in state assemblies. As taxpayers, we fund these assembly and Parliament sessions. Sometimes these assembly sessions are reduced to a joke where theatrics and rhetoric rule and citizen issues become just a side note, a footnote. Take a look at what happened in Delhi today. The Kejriwal government called a 2-day session to discuss Manipur. Now, I'm not saying Manipur is not an important issue, of course it is. But the Parliament has already deliberated on Manipur for a full 3 days. And it's not like Delhi doesn't have its own issues that don't need attention. For example, the Chief Minister has not said a word about the 45 crore rupees spent on renovating his official bungalow. Anyhow, the assembly session got underway and so did the fireworks. They are on your screens right now. BJP MLAs, all 8 of them, showed up wearing black shirts with alleged scams of the Aam Aadmi Party printed on them. There they are. Then, inside, they created such a ruckus that 5 of them had to be marshalled out. What was the hangama about? Well, the BJP MLA's contention is, why should the Delhi Assembly discuss Manipur? In fact, one BJP MLA rather controversially went on to say that Manipur does not matter. Take a look at what happened inside the assembly. मोदी तेरे राज में जितेंद्र मार्शल आउट जी को मार्शल आउट किया जाए। जो नहीं बैठेगा वो मार्शल आउट होगा। देखिए, जितेंद्र महाजन जी का मार्शल आउट किया जाए। मजबूर मत कीजिए। मोदी जी But the Chief Minister of Delhi was not to be deterred. He targeted the Prime Minister over Manipur and questioned his silence over the matter. Listen in. दिल्ली के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक साफ साफ ये कह रहे हैं कि मणिपुर से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी? अध्यक्ष महोदय, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारें और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं। जब से मणिपुर की घटना घटी है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मणिपुर के अंदर 6500 एफआईआर हो गई 190 दिन के अंदर। 3 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में 6500 एफआईआर हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मणिपुर में 4000 लोगों के घर जला दिए गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 60,000 लोग बेघर हो गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 350 धार्मिक स्थल जला दिए गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री एक पिता के समान होता है सबके लिए।
वो जो बेटियां जिनके साथ ये गलत काम किया जा रहा था, या जितनी इतनी बेटियों के साथ उनके मुख्यमंत्री का बीरेन्द्र सिंह का कहना है कि ये तो रोज हो रहा है। यहाँ पे लोग प्रधानमंत्री को रोज याद नहीं करते। आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी, घर में पानी नहीं आ रहा, तो लोग प्रधानमंत्री को याद नहीं करते। प्रधानमंत्री को याद तब करते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब आदमी याद करता है यार मेरा प्रधानमंत्री मेरे को बचाएगा। उन महिलाओं के लिए तो सब कुछ फेल हो गया था जिनको निर्वस्त्र करके वहां पे खुलेआम सड़कों पे घुमाया गया और खुलेआम उनके साथ गलत काम किया गया। वो तो बेटियां हैं हमारे देश की, वो तो प्रधानमंत्री जी की उम्र के हिसाब से वो तो उनके पिता समान है। पोजीशन के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी प्रधानमंत्री तो उनके पिता समान है। और जिस दिन अगर बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही है और बाप कहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेटियां कहाँ जाएंगी? बाप अगर ऐसे मौके पे मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहाँ जाएंगी? केंद्रीय फोर्सेस, आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच में खुलेआम झगड़ा हो गया और गोलाबारी हो गई, जो आज तक भारत में कभी नहीं हुई कि सेंट्रल फोर्सेस और लोकल पुलिस के बीच में झगड़ा हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर भारत की थू थू हो रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इस पे चर्चा हुई, अमेरिका के अंदर इस पे चर्चा हुई, वहां के नेताओं ने इसकी थू थू की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे, कुछ नहीं बोले। Now, the Delhi Assembly session has been extended till tomorrow to discuss Manipur again. This is the same session, just by the way, that the LG of Delhi had objected to, calling it illegal. Now, not too long ago, the Home Minister of India in Parliament had criticized AAP's assembly sessions, saying they were called at the whims of the Chief Minister not to do any work or speak about Delhi, but to criticize the PM. Listen in. एक असेंबली देश में ऐसी है, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की, जिसका सत्र अवसान ही नहीं होता है, चालू ही रहती है। और जब भी पॉलिटिकल भाषण देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, सदन के विशेषाधिकार का उपयोग करना है, किसी को गाली गलौज करना है, तो आधे दिन का सत्र बुलाकर गाली बोलकर फिर से सत्र निलंबित कर देते हैं। सत्र का अवसान ही नहीं होता है। मान्य देखिए, ऐसी कोई सरकार देखी है आपने? मैं इसलिए कह रहा हूं, इनको बताता हूं आप किसका समर्थन कर रहे हो, किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो माननीय अध्यक्ष जी। और देश की जनता को ये सब मालूम है। और एक कैबिनेट के अधिकारों की बात कर रहे हैं, असेंबली के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 5 बैठकें हुई, 2 दिन का, जो मजबूरी है बजट पारित कराना है। 21 में भी एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 3 दिन की बैठक करी, 4 बैठकें करी, वो बजट सत्र था, मजबूरी है। 2022 में एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, क्योंकि मजबूरी है बजट पारित करना है। और 2023 में भी एक सत्र बुलाया गया, बजट सत्र। इसके अलावा विधानसभा ही नहीं बुलाई माननीय अध्यक्ष जी। अरे विधानसभा के अधिकारों की हमारे विपक्षी दल के मित्र, कौन से अधिकार भाई? विधानसभा बुलानी है, नहीं है। दिल्ली के उनकी सरकार अपोजिशन का गला क्यों घोट रही है? प्रजातंत्र की हत्या कर दी गई है। आज विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई है। हमारे 6 विधायकों को मार्शल आउट किया है। मैंने और विजेंद्र गुप्ता जी ने उसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया है। अब हम मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए आए हैं और हम उनसे पूछना चाहते हैं आखिर हमारा क्या कसूर है। दिल्ली के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, केजरीवाल के शीश महल पर बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी, उन भ्रष्टाचार के मामलों पर बात नहीं करेंगे, मंत्री जेल में उन पर बात नहीं करेंगे, और उन पर बात करेंगे जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य है दिल्ली के लोगों का कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सदन का दुरुपयोग मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। Let me go across to my guests who are joining me this evening. Bansuri Swaraj is secretary of the Delhi BJP. She's joining us on the broadcast. I think she's making her debut on the urban debate. Hi, Bansuri. Neeraj Mishra is a Congress spokesperson joining us on the broadcast. And Parvinder Sethi is a political analyst. Will speak on behalf of the Aam Aadmi Party. He's joining us in the studio. Thank you very much. Bansuri, I'm going to start with you.
My question to you is this. One of the BJP MLAs today stood up in the assembly and said, Manipur does not matter. One of your MLAs walked out, actually was marshaled out, and said democracy has been murdered by the Aam Aadmi Party. Bansuri, how is speaking about Manipur in the Delhi assembly murdering democracy in India? Shreya, today itself, a sister concerned channel of yours did a major expose how a sitting MLA of the Aam Aadmi Party, Mr. Neeraj Mishra, is running an extortion racket along with, and he's in cahoots with a known gangster, Kapil Sangwan. He's picking out targets, and then Kapil Sangwan is going ahead and threatening them. And then whatever extortion money is, they divide it in percentages of 70 for the gangster and 30% for the sitting MLA, Mr. Neeraj Mishra. Now tell me one thing, as far as Manipur is concerned, Manipur of course matters. But today when a sister concerned channel of yours has done such a major expose, and the Aam Aadmi Party government, which basically came to power because they came on an anti-corruption plank. But today if they are drowning in scams, you yourselves talked about the 42,000 crore rupees which has been used for the, the 45 crore rupees which have been used for the Sheesh Mahal, for the grand bungalow that Mr. Kejriwal is living in. Please tell me, when there are issues being raised regarding contaminated water by AAP MLAs, Mr. Bhupinder Singh Joon, when there is lack of health services, an issue which is being raised by an AAP MLA, Rituraj Jha, when there is an issue about Rajiv Gandhi Cancer Institute where doctors are not being paid salaries by Shri Rajendra Pal, who is again an Aam Aadmi Party MLA, the Kejriwal government, and especially the Chief Minister, does not want to deal with any of these issues. What he does is, he goes ahead and look at the insensitivity of the Kejriwal government. They misuse Manipur to deflect the entire debate from Delhi-related issues and want to actually talk about Manipur. Now, regarding Manipur, the Honorable Prime Minister has already spoken. It is the opposition that decided not to accept a debate on Manipur. There were repeated requests by the Honorable Home Minister in Parliament to have the debate. They did not accept that. Sure. Then, the Prime Minister spoke on Manipur on the 20th of July, before commencement of the monsoon session of the Parliament. He spoke about Manipur during his address on the no confidence motion. And yet again, Shreya, he spoke about Manipur from Lal Killa on 15th of August. He has dealt with Manipur and he's speaking to the people of India. But the insensitivity of the Kejriwal government to misuse Fair point. Manipur issue, to not deal with what is going on in Delhi, that is very saddening. Fair point. Fair point. जवाब दीजिए परविंदर जी. बड़ी दुख की बात है कि मणिपुर जैसा इशू, मैं तो ये समझता हूं कि ये हर राज्य के विधानसभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए, हर पंचायत के अंदर इसकी चर्चा होनी चाहिए, चाहे हरियाणा का मुद्दा है, चाहे मणिपुर का मुद्दा है। और वहां पे जो लोगों का कत्लेआम होता है, अगर आपके घर का कोई व्यक्ति, जिसके घर का व्यक्ति जाता है, वो खून के आंसू होता है, आपके लिए मणिपुर मैटर ही नहीं करता। बड़ी कमाल की बात करते हैं ना, आप महंगाई पे चर्चा करते हैं, ना आप रोजगार पे चर्चा करते हैं, ना आप जवान की बात करते हैं, ना आप किसान की बात करते हैं, ना आप मजदूर की बात करते हैं, ना आप खिलाड़ी की बात करते हैं। आप किसी को जवाब, आपने 9 साल हो गए, 9.5 साल हो गए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, आपसे कहा कि पार्लियामेंट में आप आके चर्चा कीजिए मणिपुर के ऊपर, उसके लिए नो ट्रस्ट मोशन लाना पड़ा। अगर खिलाड़ी बैठते हैं तो खिलाड़ियों को एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। देश के ये हालात हो गए हैं कि सरकारी जॉब्स खत्म हो गई हैं। जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने सारी अपनी एम्प्लॉयमेंट फ्रीज कर रखी है। वहां पे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, जहां पे एक आम आदमी का शोषण है। लेकिन आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा बड़ा सिंपल है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैज ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड to speak about Manipur and everything under the sun and the moon, except matters that matter to Delhi. देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि Bansuri is right. There are issues that were raised in the Delhi Assembly by your own MLAs.
addressing all the issues. They're addressing all the issues. We need to hear. We need to hear. This is also very important issue. जहां पे 150 लोगों की मौत हो जाती है, 4000 लोगों को बेघर कराया जाता है, 60,000 लोगों को बेघर कराया जाता है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, उस डाटा को देखिए, एक राज्य जल रहा है। ये आपकी डिक्टेटरशिप की इंतहा है। आप जहां चाहते हैं वहां न्याय मिलता है, आप जहां चाहते हैं वहां न्याय नहीं मिलता। आप जहां चाहते हैं, अभी आप देखिए, आप किसी भी इशू के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी। आपकी केजरीवाल भी अपने शीश महल के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। अरे वो कोई इशू ही नहीं है। इशू क्यों नहीं है? अरे आम आदमी पार्टी का चीफ 1500 का जो और राजस्थान के मुख्यमंत्री है, बाकियों के ऊपर भी तो बात करिए ना। उनके ऊपर तो नहीं बोला था, उन लोगों ने तो नहीं बोला। गाड़ी ली है, 1.25 लाख का पेन है, 2.5 लाख का चश्मा है, 10 लाख का सूट है। हाँ। देश के प्रधानमंत्री अगर पीएम केयर फंड के अंदर उसको वो कहते हैं ये है तो पीएम केयर फंड, ये प्रधानमंत्री का पैसा है, लेकिन अगला प्रधानमंत्री उसका कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा है। Essentially, Mr. Sethi, क्यों नहीं आता? essentially, Mr. Sethi, the argument that you're giving me, and I'll let Bansuri respond to you, is that because the Prime Minister doesn't respond to questions or speak about issues that matter, because the BJP doesn't do it, so even the Aam Aadmi Party will not do it. That is exactly the logic you have just given me. You know, for citizens of this country, and Bansuri to you as well, to citizens of this country, and especially this city, what issues matter? Issues, there's an issue that was raised on the floor of the House today about contaminated drinking water. Did we hear the Chief Minister speak about it? आपको ये बात बताना चाहता हूँ, दिल्ली देश की राजधानी है। इसके अंदर जितने भी राज्य हैं भारत के, वहां के सभी लोग यहाँ पे आके रहते हैं। उनका मिक्सचर है। उनके जो यहाँ के दिल्ली के सिटीजन है, यहाँ मणिपुर के लोग भी रहते हैं, हरियाणा के लोग भी रहते हैं, पंजाब के लोग भी रहते हैं, यहाँ रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए। ये सेंटर पॉइंट है, चाहे राजधानी दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे, चाहे मेट्रो सिटीज हो, लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर सबसे पूरे देश के लोग रहते हैं। उनके इश्यूज को एड्रेस करना क्या दिल्ली की जिम्मेवारी नहीं है? अगर आप अपने विधानसभा सत्र में एक दिन मणिपुर के लिए देना चाहते हैं, उसके अंदर वो प्लान्ड है, काली टी शर्टें पहन के, उस पर राइटिंग करके, सारा कुछ स्क्रिप्टेड करके वो उसको विथड्रॉ कर रहे हैं। उनका काम है कि हर चीज के अंदर हंगामा पेश करना। आप देखिए ना, आप किसी चीज को चलने नहीं देते। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते। आप महंगाई, आप टमाटर के ऊपर बात नहीं करते, पेट्रोल के ऊपर बात नहीं करते, डीजल के ऊपर बात नहीं करते, एक आम आदमी गैस सिलेंडर के ऊपर बात नहीं करते। आप गैस सिलेंडर जो 300-400 रुपए का था, आज 1100 रुपए का हो गया। Bansuri, essentially what Mr. Parvinder is saying is this is a case of a pot calling the kettle black. One of the arguments that has come in from the Aam Aadmi Party also is, Bansuri, that if the UP Assembly, for example, can discuss Manipur, what is the problem in the Delhi Assembly discussing it? The problem is not with the Delhi Assembly discussing it. The problem is the opportunism of it. The problem is that today your sitting MLA has been caught on tape talking to very endearingly to a known gangster running a racket. You want to basically deflect from that debate. You want to also run away and scuttle away from the debate regarding contaminated water, regarding lack of health care services, regarding lack of salaries to doctors, and all these three issues were raised by their MLAs. It is the question is, what is the intention behind it? It is not that you want to have a debate on Manipur, because if you wanted to have a debate on Manipur, then you would have accepted to have a debate in Manipur. The repeated requests which were made in Parliament, you did not accede to any of them. Kejriwal ji said कि आप प्रधानमंत्री को तब याद नहीं करते जब घर में पानी नहीं होता, जब घर में गंदा पानी होता है तब आप चीफ मिनिस्टर को तो याद करते हैं। परविंदर जी, मुझे ये बताएं कि अगर दिल्ली वाले अपनी समस्याएं केजरीवाल जी, जो उनके चुने हुए मुख्यमंत्री, अगर उनके पास नहीं लेके जाएंगे तो बताइए किसके पास लेके जाएंगे? लेकिन केजरीवाल जी तो उन प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते। Shreya, today there was not a word. And imagine, Mr. Kejriwal is the great champion of democracy. Dissent is an inherent part of democracy. Today they marshaled out the BJP MLAs because the dissent was not exactly, very endearing to their ears.
नहीं देखिए आपको मैं हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है। आपके पास एमसीडी थी, आपने कूड़े के पहाड़ बना दिए। आपने क्या करा? आप किसी बात का जवाब नहीं देते। अगर वहां पे अगर जो एमएलए वो प्लान करके स्क्रिप्टेड वो काली टी शर्टें पहन के विद्रोह करेंगे और असेंबली को चलने नहीं देंगे, विधानसभा को चलने नहीं देंगे, तो मार्शल्स तो उनको बाहर करेंगे। आप देखिए ना, आपने संजय सिंह को निष्कासित कर दिया, राघव चड्ढा को निष्कासित कर दिया, आपने कितने लोगों को, आपने राहुल गांधी को निष्कासित कर दिया, उसका घर छीन लिया। आप अपोजिशन देखिए, पहले जो भारतीय जनता पार्टी के रूट्स को बनाने वाले थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी है। वो विपक्ष के सारे नेताओं का सम्मान करते थे। अब आप ये चाहते हैं कि ये विपक्ष मुक्त हो जाए भारत, यहां पे सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी हो। आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जी बने हैं या देश बड़ा है? प्रधानमंत्री जी बने हैं या बीजेपी बड़ी है? बीजेपी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े अच्छे नेता, बड़े पढ़े लिखे नेता, बड़े काबिल नेता हैं, लेकिन दो लोग इस पार्टी को चला रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं। आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारा विद्रोह है और ये इस बार साइलेंट वोटिंग होगी, मैं आपको बता रहा हूं। बाद में देखेंगे। नहीं, ये भी एक मुद्दा है। आपके पार्टी के अंदर जो इतने काबिल लोग हैं, उन लोगों को दरकिनार करा जा रहा है। परविंदर जी, जरा आप लोग अपने घर की चिंता करिए ना। देखिए कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस चिंता है, वो कहते हैं इंडिया में क्या हो रहा है, आईएनडीए में क्या हो रहा है। अगर उनकी बात तो सही है ना, और बौखलाहट इतनी जबरदस्त है कि अगर थोड़ा सा कोई हिलजुल होती है तो उनको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है, उनको नींद आनी शुरू हो जाती है, खाना खा लेते हैं, बेचारे भूखे रहते हैं कि ये हमारी राजनीतिक जो जमीन है वो सरकती जा रही है। 3 बार दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया, एमसीडी में आपको नकार दिया, हिमाचल में आपको नकार दिया, कर्नाटक में आपको नकार दिया, 5 राज्य और हैं जिसमें से 4 राज्य में भी आपको नकार दिया जाएगा। ये जनता का फैसला है, ये जनता का मैंडेट है। इसका फैसला ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हो। जनता हर चीज देखती है, हर चीज जानती है और हर चीज समझती है। Bansuri, I can give you 20 seconds because I have to go to the Congress spokesperson as well. Go ahead. Just 10 seconds to respond to what Parvinder ji has said. Am I Go audible? ahead. Please. या परविंदर जी, आप बार बार विद्रोह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है। विद्रोह का अर्थ होता है बगावत। जो भाजपा के विधायकों ने करा वो बगावत नहीं थी, ये लोकतंत्र है। उन्होंने प्रदर्शन करा था। अब यही आपकी मानसिकता को दिखाता है। This is a democracy. Dissent is an inherent part of it. But the question is that your chief minister is unwilling to hear dissent or any real issues and is unwilling to answer to the people of Delhi. अब जरा कांग्रेस को भी, कांग्रेस भी है ना। अब बेशक 6 एमएलए हैं, लेकिन है ना कांग्रेस दिल्ली में। एंड वी हैव नीरज मिश्रा, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, हु इज विद अस एज वेल एंड हैज शोन ग्रेट पेशेंस वेटिंग फॉर 24 minutes. First of all, Neeraj, thank you very much. I want to know what the Congress's view is about what has happened in the Delhi Assembly today. So Shreya, in the opening remark what Bansuri made, I was amused. If I would have skipped the names what she was taking, I was thinking that she was talking about the incumbent central government. How Modi ji's government's failures have been, it was just sounding like that. Only the difference was that the names were of the Aam Aadmi people. So how the Congress sees it, that it is very important to have discussion on Manipur. I really don't buy this fact that the Prime Minister spoke. For the first instance, when Prime Minister spoke after 85 days on the opening of the parliament, that was for 36 seconds. During the no confidence motion, in his 2-hour, 12-minute long speech, Prime Minister spoke about Manipur for 2 minutes and 12 seconds to be precise. Manipur, which has been burning for last 100 days, needs the attention of each and every citizen. I agree to the fact that all the civic issues which Delhi faces needs to be discussed in the assembly. But Manipur, because this central government has been cheating the people of this country by not coming out, not placing the facts, and not making an appeal of peace in the state,
every assembly in this country should discuss, and on every platform they should ensure that the failure of the central government and especially of Amit Shah, the Home Minister of this country, it should be brought out. And what the Delhi government in Delhi Assembly did is perfectly right. And one more thing, because dissent is inherently part of this democracy, which Bansuri was saying, what happens when the leader of opposition in Lok Sabha, Adhiranjan Chaudhary ji, when he tells this government that you are a failure when it comes to China, you are a failure when it comes to Manipur, you are a failure when it comes to unemployment, you are a failure when it comes to inflation, he is suspended from the parliament. Have you seen this in any democracy throughout the world, that the leader of opposition is suspended? What happens in Rajya Sabha when the government wants to discuss Delhi's services bill? The main person, the main party and its leader, which is being affected by this, the aggrieved party, Sanjay Singh, is suspended out of the Rajya Sabha. So this is what is happening throughout the country. Now we need to understand, Shreya, that all the issues cannot be deflected when it comes to Manipur. Manipur is a prominent issue, and all the opposition's party are together and raising this voice that this government needs to be accountable Bansuri for Swaraj, whatever chaos has been created in I have Manipur. 20 seconds. I'll give it to Bansuri Swaraj. Yes. Okay, Bansuri Swaraj, I have 20 seconds. I'll give it to you because here you were trying to divide and rule over what Alka Lamba had said. Here is the Congress party spokesperson and the Aam Aadmi party proxy spokesperson on the same page. See, that is unfortunately, they're very unlikely alliance partners. It is their, what should I say? Well, they have some majboori that they have to actually go ahead for the alliance. But what I want to say is, if Manipur is such a prominent issue, and undeniably Manipur is an issue which is already action is being taken, I want to ask, why did the Congress party not accept a debate? Repeated requests by the Home Minister. Why did the Congress party not accept to have a debate on Manipur in Parliament? And when they did bring the no confidence motion, Shreya, purportedly for Manipur, what were the speeches? The speeches by Shri Rahul Gandhi or even other Congress leaders, they were nothing but a personal slugfest. They were nothing but personal insult fest. They were marred by political rhetoric. They are not serious about Manipur. And I want to know from Neeraj ji, for 15 years you had Srimati Sheila Dikshit, who was a very popular Chief Minister of Congress. And please tell me, was there ever this kind of jostling ever during her reign when the Congress was here at the helm of affairs? Never. It is only since the Aam Aadmi Party, which unseated the Congress and came to power in 2015, that they are not dealing with any issues. They are quarrelsome. They actually make excuses for taking no actions. They fight and jostle with the LG on every issue, and they only make excuses. Today as well, they are misusing the Manipur issue to not deal with a single issue related to Delhi, whether it is contaminated water, or it is lack of health services, or it is the issue of non-salary of doctors, or even the fact that the sitting MLA Naresh Balyan of the Aam Aadmi Party was caught red-handed on a tape dealing with a known gangster running an extortion racket. None of the issues were dealt with. And the insensitivity is appalling that you're misusing Manipur to scuttle away from issues. Okay, 5 seconds. Parvinder ji is asking me. I'm completely out of time after that. कि विद्रोह मैंने करेक्ट शब्द नहीं किया क्योंकि गुंडागर्दी इज नॉट ए डिसेंट वर्ड. और दूसरी बात, बार बार वो नरेश बल्यान जी का जिक्र कर रही हैं. आप खुद ही पुलिस हो गए, आप खुद ही न्यायालय हो गए, आपने खुद ही फैसला सुना दिया. ये एक जांच का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है. अगर एक गुंडा अगर वहां के लोगों से एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठी कर रहा है तो दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर. पुलिस आपकी है, आपको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पे. आप अगर वहां पे नरेश बाल्यान के अगर दोषी
आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि उनके एमएलए नहीं, आपके एमएलए का नाम आ रहा और आप कह रहे हैं पुलिस को शर्मिंदा होना चाहिए। वो जांच का विषय। ही वाज थ्रेटनिंग, मेरी अभी डिबेट थी, पहले मैंने देखा ही वाज थ्रेटनिंग टू नरेश बाल्यान आल्सो। इन्होंने उसकी स्क्रिप्ट, अब इनके पास जितने गैंगस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे बड़ी अच्छी सांठगांठ है। ये उनके थ्रू जो है ये टारगेटिंग 2024 की जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके अंदर वो किसी को छोड़ते नहीं है, चाहे वो गैंगस्टर हो। उससे पहले भी आपने देखा होगा जब वो शराब के अंदर वो बोला जी मैं 100 करोड़ रुपए दिए, वो भी जेल से बोल रहा था। जो लोगों की सुपारी लेता है, जो लोगों से एक्सटॉर्शन मनी लेता है, उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। मैं कह रहा हूं बिल्कुल डेफिनेटली, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पॉलिटिकल हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर उसने कोई गलत काम करा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जनता है, सब जानती है। बिल्कुल। एंड इट सीम्स लाइक नो, इट सीम्स लाइक मणिपुर वाज यूज्ड एज अ डिफ्लेक्शन टैक्टिक टू आंसर द क्वेश्चंस दैट द आम आदमी पार्टी शुड हैव आंसर्ड इन द असेंबली टुडे। बहुत मुद्दे हैं दिल्ली के which need to be addressed. They are not being addressed. Assembly sessions are called to address muddas of a union territory or a state. देश का कोई हिस्सा चल रहा है, वो मुद्दा नहीं है। वो जो पॉलिटिकल, अगर जनता ने आपको चुनकर भेजा, चाहे सांसद भेजा, चाहे विधायक भेजा, चाहे मुख्यमंत्री भेजा, आपका फर्ज बनता है कि आप जनता के मुद्दों को एड्रेस करें। Okay, we'll leave it there for the moment. I'm out of time. Thank you very much. Thanks, Bansuri, for joining us. Parvinder ji, thank you very much for joining us as well. And Neeraj Mishra, thank you very much. I'm slipping into a quick break on the show. Up next, a milestone for India's moon mission. That is coming up next. Do stay with us.